Hello everyone. So very good evening to all of you. Welcome to another session by IELTS Made Easy. Today we are going to discuss about line graph. Right? Before starting, let me introduce myself. My name is Maninder and I'm working with IELTS Made Easy. So here at IELTS Made Easy, we provide free live classes on YouTube. So in these live classes, you will get detailed explanation of every module. Along with that, there will be vocabulary improvement and doubt clarification. So if you have any doubt, then ask me in the chat box. I'll try to reply all of your comments. Right? Okay, so about the classes, we have reading and listening sessions in the afternoon and writing and speaking classes in the evening, that is at 7 p.m. right? So all of these sessions are from Monday to Friday. And if you want to download free study material, go to our Telegram channel. So the address is IELTS_made_easy. And the most important thing, don't forget to subscribe to our channel and hit the like button so that you'll get the latest notifications. Okay guys, so in task 1, you need to write a report on a chart. So that chart could be bar chart, line graph, pie chart, table, flow chart, process, maps. Okay, so today's question is, the chart below shows 3 different types of crime in England from 1970 to 2005. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Right? And you should spend about 20 minutes, not more than that. Okay guys, so I would suggest you to cover task 1 in just 20 minutes so that you'll have enough time for task 2. And that too, you need to write down 150 words, at least 150 words for task 1. Not less than that, otherwise it will be considered as incomplete. Right? So टास्क अचीवमेंट में फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर 150 वर्ड से कम लिखेंगे. राइट? Okay, so this is the chart. So here this solid black line shows number of car thefts. It's increasing. Then this is house burglary, and this line is about street robbery. Right? So there are 3 different types of crime. Okay guys, so what would be the introduction for this graph? Write down the introduction, and in the meantime, let me go through your comments. Okay, so let's start with Simran. Good evening, Simran. Very good evening. Good evening, Manpreet. Hello, Shushma. I'm fine. Thank you so much. How are you? Good evening, Vijay. Very good evening, Karamjeet. Hello, Kiran Bhatt. Good evening, Rupinder, Davandeep, Jagjit. Very good evening, guys. Rishi. Good evening, Iftikhar. Sorry for the wrong pronunciation. Iftikhar. Hello, Simranpreet. Hello, Shashi Kumar. How are you?
सो गुरप्रीत, राइटिंग टास्क 2 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, सो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे राइटिंग टास्क 2 की। यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। हेलो रमनदीप। Okay, so Amandeep said the line graph depicts the information about various types of crime in England between this and this. The data is calibrated in terms of million. Yes, right. Very good, Amandeep. Excellent. The given chart compares three distinct kind of crimes in England from this to this. Yes, Rupinder, that's fine. Good, very good. Hello, Raman. I'm fine. Thank you so much. Satvir, very good evening. Okay, Aditya said the given line graph illustrates the information about three different types of crime in England. Between this and this. Right. Good. Very good. Kajal, the line graph illustrates the comparison of three different categories of crime in England and Wales. So Wales is not there, Kajal. It's only about England. Over a 35-year period. Okay. Yes, 35-year period. 1970 to 2005. Good. Very good. Good evening, Hani Patel. Prabjeet, very good evening. Hello, Dalveer. Gurjeet, good evening. Sumit, very good evening. Okay, line graph illustrates about the information of England in which three types of crime, namely this, during 35 years. Okay, Mantasha, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको. Line graph illustrates the information about three types of crime, namely this, during 35 years. Right? So in which वहाँ से remove करना पड़ेगा. Otherwise it's fine. Good. Very good. Ramandeep, good evening. AKPTL, very good evening. Saranjeet, good evening, guys. Okay, VG said the line graph describes the information about three kinds of crimes in England. Right. From this to this. Okay, x-axis shows the years ranging from this to this, while y-axis depicts about the million of people. Right, that's fine, VG. But you don't need to write this thing x-axis or y-axis. So these technical terms, no need to write it. Right, simply write the introduction and then start talking about details. Right. The given line graph represents three categories of law-breaking offenses in England between this and this, 1975 and 2005. Right? So, between 1970, sorry, not 1975, 1970 and 2005. Right? Okay, provided line graph illustrates the detail of distinct offenses recorded in English from this to this. Right. Okay, Lakhvinder, डिटेल्स ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस आ जाएगा फिर. ठीक है, सो एस लगा दो उसके साथ, अदरवाइज इट्स फाइन. इंग्लिश नहीं है, इंग्लैंड आएगा. राइट लखविंदर, इंग्लैंड. हेलो अमित, योगिता, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. ओके गुरप्रीत, द गिवन चार्ट डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन थ्री डिसिमिलर सॉर्ट्स ऑफ क्राइम. इंफॉर्मेशन अबाउट रह गया गुरप्रीत, वहाँ पे मिसिंग है. बिटवीन दिस एंड दिस इन द नेशन ऑफ इंग्लैंड. ओके, इन इंग्लैंड सिंपली लिख दो, नेशन ऑफ इंग्लैंड लिखने की there is no need. Okay, Om Prakash, the line graph displays various types of crime in England from this to this. Right, good, very good. Very good, guys. Iftikhar, the chart illustrates the three different kinds of crime that happened during this to this. In England missing है Iftikhar, so in England भी लिखो साथ में, otherwise it's good. Very good. Husanpreet, good evening, very good evening.
Okay, can't the assigned line graph chart reveals the information about various kinds of scam and scandal in England between 1970 and 2005. Okay, so it's not about scam and scandal, can't. So it's about any antisocial activity, any crime, right? So this is not scam or scandal. Car theft, house burglary, street robbery, these are not scams, right? So scams के अंदर नहीं आते, just change it. Okay guys, so don't write that vocabulary which you are not 100% sure about. ठीक है, so कुछ भी synonym लिखना है तो वो वाला लिखो जिसके बारे में आपको information है, जिसके बारे में आपको definition पता है जिसकी, right? So try to use those words. So don't use loose synonyms or wrong synonyms because it will impact your scores. Okay, fine, good. Shravan, the given line chart depicts the various types of crime that were occurred between this and this. In England, Shravan in England is missing. Okay, Sushma said the given line graph illustrates the information about three different kinds of crime in England from this to this, right? Fine, very good, Sushma. ओके रमन, फ्लो चार्ट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सो फ्लो चार्ट भी कवर कर लेंगे हम किसी दिन, राइट? डेफिनेटली हम एक जो लेक्चर है वो फ्लो चार्ट पे कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. Chart depicts the information about the various sorts of crime in England between 1970 and 2005. Right, good, good, Satvir, very good. Good evening, Charan, very good evening. Okay, Komal said line graph depicts the information about three different kind of crime in England between 1970 to this. Okay, Komal यहाँ पे between 1970 and 2005, right? So between के साथ always use and, from के साथ always use to. ठीक है, so ये वाला जो रूल है वो याद रख लो, between के साथ हमेशा and आएगा, from के साथ हमेशा to आएगा. ठीक है, good, very good. कोमल राणा, very good. Okay, Manupreet, the line graph depicts the information about three various categories of crime in England between 1970 and 2000. Right, good, very good. Hello, Samir. Hello, Jeffrey. Harjeet said line graph depicts the information about three various kind of crime in England between this and this. Right, good, very good, Harjeet. Jeffrey, the line graph elucidates the three kind of offenses happening in England between this and this. Okay, elucidates. Jeffrey, elucidate के साथ s आ जाएगा, right? Elucidates. Yes, Shibu for general reading. So reading का जो session है, we have reading sessions in the afternoon, right? So 12 p.m. we have reading sessions, so you can attend that session if you have any problem in reading, right? Okay, good evening, Pushpinder. Hello, Sukhdeep Sidhu. Welcome, welcome to the session. Okay, Pinky said the rendered bar graph demonstrate the information about three types of crime which were committed by England. Okay, which were committed by England नहीं आएगा यहाँ पे Pinky. So which were committed by the people in England, by the people, right? By the individuals in England from this to this. Okay, so otherwise it's fine, good, very good. Yes, Mantasha, we are going to start it. So फिर आप ही बोल देते हो कि मेरा कमेंट नहीं रीड किया, राइट? सो फिर मिस हो जाता है कमेंट मेरे से. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर बीपी. ओके, सो द नंबर ऑफ
car thefts was at around 0.4 million in 1970. So 1970 से बात करते हैं हम। पहले सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, कार थेफ्ट के बारे में, राइट। सो यहाँ पे कितना है, 0.4 मिलियन, ठीक है, कार थेफ्ट, विच इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन जस्ट 25 ईयर्स। फिर अगला 25 ईयर का पीरियड है, तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, राइट। 0.4 से लेके 1.6 पे चला गया, 4 टाइम्स इंक्रीज, राइट। सो 70 से लेके 95 तक क्या है, 25 ईयर का पीरियड। तो इस 25 ईयर के पीरियड में ये कहाँ चला गया, 4 टाइम्स हाई, 4 टाइम इंक्रीज हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट when it followed a rapid decrease to 1 million by 2005, ठीक है। उसके बाद इसने एक रैपिड डिक्रीज फॉलो किया, कहाँ तक, 1 मिलियन तक 2005 में, राइट। सो लास्ट में रैपिड डिक्रीज हुआ इसमें, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कार थेफ्ट के बारे में। उसके बाद we'll start with house burglaries. The number of house burglaries showed a similar trend as car theft for the first 10 years. ठीक है। सो पहले जो 10 साल थे 1970 से लेके 1980 तक, सो यहाँ पे सिमिलर ट्रेंड था, ठीक है। सो जो कार थेफ्ट का ट्रेंड था वही यहाँ पे ट्रेंड है, सिमिलर ट्रेंड, राइट। आफ्टर विच द नंबर फ्लक्चुएटेड अराउंड 0.6 मिलियन, ठीक है। सो उसके बाद जो नंबर था वो फ्लक्चुएट होने लग गया, कहाँ पे, 0.6 मिलियन के अराउंड। सो ये वाली 0.6 मिलियन की लाइन है, तो यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी ऊपर जा रहा था तो कभी नीचे आ रहा था, राइट। सो ये नंबर फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है इसमें, 0.6 मिलियन के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है, बिफोर फाइनली रीच 0.5 मिलियन इन द एंड, ठीक है। सो फाइनली कहाँ पे पहुंच गया वो, 0.5 मिलियन इन द एंड, राइट। 6 और 4 के बीच 0.5 पे पहुंच गया वो, ठीक है। सो ये हो गया कार थेफ्ट और हाउस बर्गलरी के बारे में। एंड देन स्ट्रीट रॉबरी, ठीक है। सिमरन, ओके, सो आई मिस दैट, so I missed your intro, I think so. गुड इवनिंग डेविड, लाइन ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन, ओके। समीर आलम, यहाँ पे गिव्स आएगा, लाइन ग्राफ गिव्स with S gives information about the represent 3 categories of law breaking offenses in England between this and this. About the represent जो लिखा है उसको रिमूव कर दो, it doesn't make any sense, so represent को रिमूव कर दो, otherwise it's fine, very good. Yes हरप्रीत, please ask your question. So इसी के साथ ही क्वेश्चन आप अपना लिख सकते थे, ठीक है। जब कमेंट आपने लिखा है तो इसी के साथ ही क्वेश्चन लिख दिया करो, फिर दोबारा मुझे पता नहीं चलता कि किसने क्वेश्चन पूछा था, राइट। बिकॉज देर आर lots of comments here, right, so it's very difficult to read all of them. So William, बीपी इज बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। सो जिसको हम सपोर्टिंग पैराग्राफ भी बोलते हैं या डिटेल्स पैराग्राफ भी बोल देते हैं, राइट। उसको शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोल देते हैं, राइट। सो या तो इसको बॉडी पैराग्राफ बोल सकते हैं या डिटेल्स पैराग्राफ बोल सकते हैं, राइट, और सपोर्टिंग पैराग्राफ भी बोल सकते हैं, राइट। सो आई एम सॉरी फॉर माई ड्राइंग, इट्स नॉट दैट गुड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, it's very difficult to draw with mouse. So body paragraph, detail paragraph और supporting paragraph, ठीक है। so कुछ भी बोल सकते हो आप। Okay, Sukhdeep said the provided line graph illustrates the different criminal activities committed in England from this to this. The calibration has been done in millions, right, million, राइट, मिलियन लिखेंगे सुखदीप, नॉट मिलियंस, मिलियन। ओके हुसनप्रीत, नीरू, सो आई मिस योर कमेंट्स, सो सॉरी। ओके सिमरन शर्मा, द लाइन ग्राफ इलुस्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट 3 डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ क्राइम विच वर कमिटेड बाय, ठीक है। सो वर यहाँ पे मिसिंग है, वर्ब जो आपकी विच के बाद वर आएगा, ठीक है। वर लिखो, विच वर कमिटेड
by people who used to live in England between this and this. Data is calibrated in million. Otherwise it's fine. Good. Very good, Simran. So यहाँ पे बस वर्ब मिसिंग है, अदरवाइज आपकी इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही है. इट्स परफेक्ट. सो नीरू, ओवरऑल हम लास्ट में लिखेंगे, राइट. सो ओवरऑल ऐसा नहीं है, देयर इज नो सच रूल दैट ओवरऑल शुड बी रिटन इन द लास्ट. सो यू कैन राइट ओवरऑल आफ्टर इंट्रोडक्शन एज वेल, राइट. सो इंट्रोडक्शन के बाद भी आप लिख सकते हो. Okay, Sandhu Kirat, the given line graph depicts the information about 3 types of crime in England between 1970 and 2005. Right, good. Very good. So, overall लिखेंगे guys, overall आएगा last में, right? Okay. So, third thing, जो हमारा third रह गया वो था अभी कार थेफ्ट के बारे में भी we have already discussed, house burglary भी discussed, and street robbery is left, right. So street robbery में क्या है, street robberies were very few, 0.01 million approximately from 1970 to 1990 तक, ठीक है. सो 1970 से लेके 1990 तक जो स्ट्रीट रॉबरीज थी वो 0.1 के नज़दीक थी, राइट, यहाँ तक. तो 0.1 तक थी यहाँ पे. तो उसके बाद then there was moderate growth in the number of street burglaries and the number grew to 0.2 million by 2000, ठीक है. सो 2000 तक कहाँ चला गया वो नंबर, 0.2 मिलियन तक, ठीक है. सो मॉडरेट ग्रोथ हुई, मॉडरेट मतलब कि स्लो ग्रोथ है जो, ठीक है. सो ये हुई. उसके बाद 2000 तक 0.2 मिलियन रीच कर गया ये, राइट. सो उसके बाद क्या हुआ, बट आफ्टर दैट अ स्टेबिलिटी वाज शोन इन स्ट्रीट रॉबरी केसेस टिल द एंड, ठीक है. उसके बाद एक स्टेबिलिटी आ गई स्ट्रीट रॉबरी केसेस में. सो ये स्टेबिलिटी मतलब कि फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है. सो स्टेबिलिटी आ गई यहाँ पे टिल द एंड. ओके गाइज, सो व्हाट वुड बी द ओवरऑल स्टेटमेंट नाउ. अभी हम ओवरऑल स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी. ओवरऑल स्टेटमेंट में गाइस जब ओवर द टाइम होता है पीरियड, ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो उसमें ओवरऑल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या हो रहा है, ठीक है. सो एक तो ये हो सकता है मेन फीचर, और एक ये हो सकता है कि हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है, ठीक है. सो अगर हाईएस्ट लोएस्ट वाला ठीक बन रहा है तो वो भी लिख सकते हो. अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो भी लिख सकते हो, राइट. सो दोनों ही फाइन है. सो पुष्पिंदर, okay, if you want to improve your writing, so I would suggest you to practice daily. और प्रैक्टिस करोगे तो you need someone who can evaluate your writing, right. so आपको मतलब कोई चाहिए होगा जो आपकी राइटिंग को इवेल्युएट कर सके, राइट. सो प्रैक्टिस डेली भी करेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज जब तक आपको आपकी मिस्टेक्स का पता नहीं चलेगा यू विल नॉट इम्प्रूव, राइट. सो डेली प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा. सो आई वुड सजेस्ट यू टू डू प्रैक्टिस एज वेल एज एनालाइज, ट्राई टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, राइट. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 7347081010, ठीक है. सो यहाँ पे आपको पर्सनल क्लासेस मिल जाएंगी, पेड ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, राइट. सो आपको एक पर्सनल ट्यूटर दे दिए जाएंगे who will check your writing and will give you feedback accordingly and guide you how to write a proper task 1 and task 2, right. so जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी तभी पता चलेगा अगर आप इवेल्युएट करवाओगे टास्क, राइट. तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और सेंड मैसेज एट एनी टाइम 7347081010, राइट. राइटिंग में आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव, ठीक है. सो पर्सनल क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने मार्क्स अचीव किए हैं, ठीक है. सो स्पेशली राइटिंग और स्पीकिंग में, ठीक है. सो पर्सनल क्लासेस आर वेरी बेनिफिशियल गाइज. ओके नवदीप, सो दिस क्लास इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, या मंडे से फ्राइडे तक होती है, नॉट डेली.
Okay, overall it can be seen that car theft and house burglaries followed decline trend, whereas street robbery followed upward trend. So where, Mantasha, where it is declined trend? I can't see any decline trend here. See, it start from here and go upward, end at here. Similarly, house burglary start from here, end at here. So where is the declining trend? So just change it, Mantasha, it's not declining. Okay guys, so overall statement, the figure was at the maximum for car thefts and minimum for street robberies. ठीक है, so car thefts की जो figure थी वो maximum पे थी और street robberies थी वो minimum थी throughout the given period of 35 years. ठीक है, so एक तो ऐसे लिख सकते हैं हम, right? So one overall is this, and also it can be seen that there was an upward trend in all three types of crime. ठीक है, so जो trend था वो upward था, तीनों क्राइम टाइप में ट्रेंड था जो अपवर्ड था, एंड उसमें मैक्सिमम थे कार थेफ्ट के केसेस एंड मिनिमम थे स्ट्रीट रॉबरी के केसेस, राइट? तो ये वाला हो गया हमारा ओवरऑल स्टेटमेंट, राइट? सो यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट मैक्सिमम है हमारा कार थेफ्ट, अगर केसेस की बात करें तो मैक्सिमम पे था कार थेफ्ट एंड मिनिमम पे था स्ट्रीट रॉबरी, और इंक्लाइनिंग ट्रेंड है तीनों में। तो यहाँ पे ये स्ट्रीट रॉबरीज यहाँ से स्टार्ट हुई और इंक्लाइन होके यहाँ पे आ गए, राइट? सो तीनों में इंक्लाइनिंग ट्रेंड है, इंक्रीज ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। Okay guys, so I hope you understand it, right? So this is the overall statement, and if you want to download free study material, go to our Telegram channel IELTS_made_easy. So from here you can get study material for free, right? And the most important thing, those students who want their desired band score in first attempt, I would suggest you to take personal classes. Okay, personal online classes we have started for those students who are serious and who don't want to give their exam second time. ठीक है, so उनके लिए personal classes बहुत ही beneficial हैं, right? So in personal classes you will be given a tutor, so there will be a personal tutor आपका, ठीक है? जो पर्सनल ट्यूटर होंगे वो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग एवेल्यूएशन करेंगे, ठीक है? सो उससे क्या पता चलेगा, यू विल गेट टू नो अबाउट योर मिस्टेक्स, एंड अगर मिस्टेक्स पता चल रही हैं ऑब्वियसली you will improve, right? So in order to get paid online classes, call on this number 73470 81010, right? Okay guys, so that's it for today. Fine, so we'll meet tomorrow at the same time. Till then,